रहीम तमाम व्यूअर्स को पैगाम सिंध एडमिन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पहले हमने प्रीपोजिशन बेसिक्स के बारे में पढ़ा था, तो उसका वीडियो नंबर 1 हमारी यूट्यूब चैनल पे पहले से अपलोड कर चुके हैं। तो आज हम वीडियो नंबर 2 अपलोड कर रहे हैं, जिसमें जो रिमेनिंग प्रीपोजिशंस हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा समझने के लिए आपको हमारा वीडियो नंबर 1 देखना होगा, ताकि आप कि जो प्रीपोजिशंस हैं, जो उसके कॉमन यूजेज है, उसके हिसाब से आपकी पूरी ग्रिप हो जाए। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि आप हमारे तमाम वीडियोस जो जॉब्स अपडेट्स के हवाले से हैं वो आपको टाइमली मिलते रहें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो प्रीपोजिशन शोइंग टाइम पे पढ़ा था, और इस वीडियो में हम प्रीपोजिशन शोइंग प्लेस पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो है वो है बाय। सो इट इज़ यूज्ड क्लोज टू और अलॉन्ग साइड ऑफ, लाइक बाय द स्कूल, बाय द विंडो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इन। तो इन इज़ यूज्ड इन एन इनक्लोज्ड प्लेस, in the geographic location, in an print medium। ठीक है। तो ये इनक्लोज प्लेस पे यूज़ होता है, जोग्राफिकल लोकेशन या प्रिंट मीडियम। वो इसका जो यूसेज है वो ये है, लाइक इन द गैराज, इन द एनवेलोप, इन सी, इन सान डिएगो, इन टेक्सास, इन अ बुक, इन अ मैगजीन। नेक्स्ट है ऑन, और इट इज़ यूज फॉर सर्टेन side, for a river, lake, for a floor in a house, for public transport, for television or radio। तो इसके एग्जाम्पल है, on the left London lies on the Thames, or on the floor, on a bus, on the air, on TV। तो इसके बाद है about। it is used around or outside of it but not exactly on related to। तो इसका एग्जाम्पल है अबाउट टाउन, अबाउट 5 feet tall, अबाउट माई फादर्स बिजनेस। और नेक्स्ट है अबव, इट इज़ सस्पेंडेड हायर देन समथिंग एल्स, सुपीरियर टू। नेक्स्ट, इट इज़ अबव द डोर, अबव मी इन रैंक। Next is after, pursued a point further from an earlier point, like chasing after the robbers, the corner after the big house। Next, against, leaning on, opposite to or facing, against the door, against the wall। Next, along, it is used tracing the length of, without emphasis on the ends, along the hallway, along the river। Next है among, in the company, 3 or more in a crowd, in the end of a long list, like among friends, among the masses, among other things। Next है around, location of something, explaining a period of time, likewise drive around the block around 30 o'clock। Before, in the front, in terms of space, before the emperor, before God। Next one is behind, on the back side of a point in space, behind the car, behind her smile। Next, below, something lower than or underneath something else, मतलब कोई भी या चीज़ नीचे हो या किसी चीज़ के नीचे हो। Next, below the stairs, below the expectations। Next, into, enter a room or building, likewise go into the kitchen, go into the house। Next है from, in the sense of where from, like a flower from the garden। Next, on to, movement
of the top of the something. Likewise, jump onto the table. Next, over, covered by something else more than, getting to the other side, overcoming an obstacle. Likewise, put a jacket over your shirt. Over 16 years of age, walk over the bridge, climb over the wall. Next है through, something with limits on top, bottom and the sides. Drive through the tunnel. Next है towards, which we say movement in the direction of something but not directly to it. मतलब किसी की तरफ डायरेक्शन हो रही हो लेकिन उस कंप्लीट एग्जैक्टली उस तरफ नहीं हो रही हो. गो 5 स्टेप टुवर्ड्स द हाउस, तो ये घर की तरफ जा रहा है, घर को नहीं जा रहा. ये चीज़ हमें समझनी होगी. तो ये जो बेसिक पॉइंट्स हम समझते जाएंगे तो हमें इसको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी. नेक्स्ट है ये कुछ और अदर इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे. अबाउट इज़ यूज्ड फॉर टॉपिक्स मीनिंग व्हाट अबाउट. वी वर टॉकिंग अबाउट यू, मतलब जो टॉपिक्स हैं या कुछ भी इस तरह का है उसके बारे में अबाउट यूज़ करेंगे. एट, अक्सर एज के बारे में भी हम एट यूज़ करते हैं. शी लर्न रशियन एट 45. बाय, हु मेड इट. राइज और फॉल ऑफ समथिंग. ट्रेवलिंग, other than walking or horse riding. Likewise, a book by Mark Twain, किसका लिखा हुआ है. Like prices have risen by 10%, मतलब भी प्राइस जो है 10% बढ़ी है. और उसके अलावा जो हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, वॉकिंग बाय, जो अदर देन वॉकिंग है उस पे है बाय कार और बाय बस ATC. फ्रॉम, हु गेव इट. ठीक है, तो इसका है अ प्रेजेंट फ्रॉम जेनी, जिसने दिया है उसकी तरफ से अगर कोई चीज़ आ रही है तो फ्रॉम होगा. इन, एंटरिंग अ कार, टैक्सी. गेट इन द कार, गेट इन टू द कार नहीं होगा, गेट इन द कार होगा. लाइकवाइज ऑफ, हु, व्हाट डिड इट बिलोंग टू, व्हाट डज इट शो. अ पेज ऑफ द बुक, द पिक्चर ऑफ अ प्लेस. ये एग्जाम्पल है उसका. ऑफ, लिविंग अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल. गेट ऑफ द ट्रेन, गेट ऑफ द कार. तो ये है. नेक्स्ट है ऑन. ऑन को हम यूज़ करेंगे वॉकिंग और राइडिंग ऑन हॉर्स बैक, एंटरिंग अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल. ऑन फुट, ऑन हॉर्स बैक, गेट ऑन द बस. बस में चढ़ने के लिए भी हम ये यूज़ करेंगे. आउट ऑफ, लिविंग अ कार और टैक्सी. गेट आउट ऑफ द टैक्सी. तो ये इस तरह के आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं इजीली. तो ये यहाँ पे हमारा वीडियो पूरा हुआ. दिस इज़ ऑल एन एजुकेशनल प्रोजेक्ट ऑफ पैगाम सिंध ऑफिशियल. हमारे साथ रहिए, हमें फीडबैक देते रहें. जो भी नेक्स्ट जॉब्स क्राइटेरियाज़ के हवाले से हमें बेहतर चीज़ लगी हम उसको नेक्स्ट अपलोड करेंगे. स्टे ट्यून्ड विद अस, दिस इज़ ऑल फॉर यू. और हमारे साथ रहिए. कोई भी फीडबैक्स वगैरह हों आप हमें टाइमली अपडेट करते रहें. बहुत शुक्रिया आपका. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.